I have literally placed my camera on top of my perfume bottle का छोटू सा ढक्कन, so I hope this won't fall. But hi guys, what's up? Welcome back to a new video. Welcome back to a new vlog. I am on my vlogging game, so I hope you are proud of me. I just realized I'm wearing the same sweatshirt that I wore in my last vlog. So if you remember, I told you in my last vlog that I'm moving to Noida for a couple of months, and obviously I have to do a lot of things before moving there. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मुझे पैकिंग करनी है ऑब्वियसली, एंड मैंने फिर स्टार्ट भी नहीं करी. एंड वी आर लीविंग आई थिंक डे आफ्टर टुमारो, सुबह लाइक 7-8 बजे जाना है यहाँ से. तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव द लग्जरी ऑफ पैकिंग या फिर लग्जरी ऑफ डिलेइंग दिस पैकिंग एनी मोर. सो आज का प्लान है आई हैव टू पैक. So I did a bunch of chores, laundry कर ली, breakfast कर लिया, नहा लिया finally, and I'm looking a lot decent. Also my hair is so oily today, लेकिन मैंने सोचा कि अब परसों मुझे travel करना तो मैं कल hair wash कर लूँगी ताकि I'll be sorted for the travel. तो आज मैंने बस dry shampoo से काम चला रखा है यहाँ पर. So let me show you what all progress I've made so far. But before that, let me show you my outfit. Wait. So I am wearing a very basic outfit. वेट में चश्मा लगा लेते, मुझे दिखेगा नहीं वरना. आज ना मैं लेंसेज लगा नहीं रही क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, एंड मेरी आंखों में हल्का सा कुछ इरिटेशन टाइप हो रहा है, तो फिर लेंसेज उसको और ट्रिगर कर देंगे. दिस इज माई OOTD. बहुत बेसिक है, आई नो ऐसा कुछ खास है नहीं, बट आई थॉट आई विल स्टिल शो यू. So basically what I like to do is, before I go on a trip or I'm packing for a trip, I like to create at least a few outfits जो कि मुझे पता है I will wear there. अगर कोई short trip होगी फिर तो मैं almost सारे outfits decide करती हूँ क्योंकि उससे ना काम बहुत easy हो जाता है. एंड जब तुम like trip में actually होते हो तो सिर्फ इस चीज़ में दिमाग नहीं लगाना होता कि क्या पहनूँ, क्या स्टाइल करूँ, कैसे. तो यूजली ट्राई कि मैं बहुत सारे आउटफिट्स बना के रख दूँ. सिंस ये वाला ट्रिप इज़ लाइक अ लॉन्गर ट्रिप क्योंकि ऑब्वियसली आई विल बी देयर फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स. मतलब मैं अप्रैल एंड में ही आऊँगी अब शायद घर वापस, तो इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें पैक करनी है. आई कांट ऑब्वियसली क्रिएट इतने सारे दिनों के लिए आउटफिट्स, बट आई स्टिल ट्राई कि मैं कुछ तो ऐसे आउटफिट्स बना के रखूँ, यू लाइक एटलीस्ट 5-10 आउटफिट्स जो कि इफ आई हैव टू गो समवेयर तो मेरे पास आउटफिट्स रेडी हो. तो आई एक्चुअली डोंट वांट टू कैरी अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब ऑब्वियसली 2 महीने के लिए जा रही हूँ तो सामान तो काफ़ी होगा, बट जैसे एक मेरा जो बड़ा सूटकेस है, शो यू इन अ मिनट. आई वांट टू कीप ओनली दैट फॉर ऑल द क्लोथ्स. एंड मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ले जाऊँ बिकॉज आई एम अ हैवी पैकर. लाइक आई अननेसेसरली पैक सो मच स्टफ, एंड इस बार मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि मैं इसे ना बहुत ज़्यादा फालतू में पैक ना करूँ चीज़ें. सो एक तो मैं कुछ आउटफिट्स डिसाइड कर लूँगी. सेकेंडली आई वॉन्ट टू पैक दोज थिंग्स जो कि मल्टीपल आउटफिट्स में चल जाएंगी. जैसे वो जो मेरी H&M की ब्लैक पैंट्स, आई नो आई कैन क्रिएट एटलीस्ट 10 आउटफिट्स विद ओनली दोज पैंट्स. आई विल कीप देम. या फिर जो H&M वाली जो जीन्स मैं हमेशा पहनती हूँ, आई नो आई कैन वेयर दैट ऑलमोस्ट एवरी डे एंड विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो लाइक मैं पहले न्यूट्रल और यू नो लाइक बेसिक्स और ऐसी चीज़ें जो जिससे आउटफिट बहुत ईजिली बन जाता है, आई वॉन्ट टू कीप मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स. एंड देन थोड़े से 2-4 स्टेटमेंट पीसेस जो कि ना बहुत स्पेसिफिक ओकेजन में ही पहन सकते हो. सो दैट इज द प्लान सो फार. ओह, द लाइटिंग हियर इज सो गुड. Sunlight is the best filter of the world. Chalo, let's start. Lightning stricken cactus and it starts to rain. The smell of steamed asphalt scented Novocaine. Nature's brew of all kinds of things. The mountain sunk hills, sky color schemes. I have so many white t-shirts. Like I'm just realizing that. What the hell? Why do I have so many white t-shirts? Now I'm already feeling tired. I don't like packing. I don't want to pack, but I have to pack. Oh my god, ये कैमरा एंगल कहाँ जा रहा है? मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ. Wow, Dikshita, you're doing such a good job in vlogging today. But I was thinking, I'm like tired already. And this is overwhelming me. Like look at this here. और यहाँ पे भी मैंने अभी काफ़ी सामान निकाल के रखा हुआ है. Let me show you. So this is a suitcase that I was just telling you about. I have to fit everything in this one suitcase, which I don't know how I'm going to do it, but should we try?
So I have got these Ziploc bags, and this is my best like packing hack while traveling. If you have such kind of Ziploc bags ना, just take them, और हर एक के अंदर you can keep like separate category of clothes. जैसे इस वाले के अंदर I've got my fancy tops. This one has all my dresses. This one has all my crop tops and spaghettis, and इस वाले में मेरा gym wear है सारा. Makes you forget about all types of things. You remind me of the Arizona thunder. Satisfy the times and make you wonder about the. Okay, so my friends just texted me. You know them, Aparna and Samriddhi. और वो लोग उन्होंने just text किया मेरे को कि we are coming over. They like we were planning to meet before me leaving, क्योंकि फिर हम 1-2 महीने तक नहीं मिल पाएंगे. And I'm thinking I'll cook spaghetti for us. मैंने actually सुबह से सोचा था कि आज मैं कुछ cook करूँगी अपने लिए lunch के लिए. Obviously कुछ करना ही पड़ेगा और vlog में भी आप लोग को दिखाऊंगी. But अब मैं plan करी कि since they are coming, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं. तो अब packing हम continue करेंगे बाद में. Before that, let's cook some spaghetti. So first and foremost, I'll keep my spaghetti to boil. वो at least like 12 minutes लेगा. So I'll just get it out of the way. And जब तक मैं सारा veggies वगैरह prep करूँगी, spaghetti boil हो जाएगी. So for that, you have to boil some water. Very easy peasy. Add in some salt, olive oil, and then when the water is boiling, add your spaghetti, and then let it cook for like 10 to 12 minutes. Hey Siri, set a timer for 12 minutes. Now till the time our spaghetti is boiling, I'll prepare all the veggies. I'm thinking I'll use some onion and then some bell peppers. I've got this like these 3 bell peppers left in the kitchen in my fridge. I'm thinking I'll use these, and spaghetti like especially white sauce I like a lot of veggies like these. Fuck, I just realized there's no garlic peeled. I'll have to peel some garlic. I love cooking, don't get me wrong, but I hate peeling garlic. Like that is one of the worst tasks I have to do in the kitchen. Tell me in the comments what is the worst task that you find like in the kitchen. Mine is peeling garlic and making rotis. बहुत ही आलस आता है मुझे दोनों करने में. Now I'll quickly cut all these veggies. So cue the transition in 3, 2, 1. Boom. Also my timer just went off. So पहले मैं ये spaghetti I think cook हो गई होगी हमारी almost. So I'll just take this off the heat. And when you're cooking oh wait, ये timer को बंद कर देती हूँ वरना ये टू करते रहेगा. So I was saying कि जब भी स्पेगेटी कुक हो जाती है ना, उसके बाद like not just स्पेगेटी, उसके कोई भी पास्ता जब भी कुक हो जाता है, just make sure when you turn off the heat, don't let it sit like this. Immediately take a strainer and then strain your pasta and then wash it with cold water. This is to ensure that the cooking process is stopped. Hello? आ गए? Wait, I'm coming. Guys, Samriddhi is here. मैं स्पेगेटी बनाने वाली हूँ. Next, I have stirred up all these veggies. So सारा प्याज, bell pepper ये वो. Also, I just realized कि अगर मेरे पास broccoli और mushroom होता ना, तो ये ज़्यादा अच्छा बनता. Because I love broccoli and mushroom and pasta. But since घर पे यही है तो अब कुछ मेरा version of pasta बन रहा है. Now for the white sauce, I'm heating up some butter in a pan. And then I'll add like just 2 spoons of maida. Oh shit, I think it's open. Oh fuck, I'm making such a mess today. Now I'll add a little bit of maida to it, like around 2 spoons. मैं ना बहुत ही रिस्की काम कर रही हूँ पता है आज. अगर ये ज़्यादा गिर गया ना, yeah, then I'll just stir it. I think थोड़ा सा और मैदा चाहिए. And then slowly add some milk. So add a little bit. Make sure you stir it a lot. इसमें बिल्कुल भी lumps नहीं होने चाहिए. And then you add rest of the milk. Now I'll season the white sauce with some salt, black pepper, red chili flakes, and then pasta seasoning. And finally some pasta seasoning. Now I'll let this come to a boil. I'll mix everything together and show you the final result.
ऑल्सो आई एड लाइक सम चीज. अभी मेरे पास ये चीज स्लाइस पड़ी हुई है तो मैं यही ऐड कर दूंगी. ओके सो द पास्ता इज मेड. वी आर वेटिंग फॉर अपर्णा टू अराइव. उसको लेट हो गया तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा ड्राई सा हो जाएगा. मैंने इसको ना बहुत सॉसी सा बनाने का ट्राई किया था बट सिंस इट विल सिट फॉर अ फ्यू मिनट्स नाउ तो इट माइट गेट अ लिटिल ड्राई बट इट्स टेस्टिंग गुड. सो दिस इज इट. बाकी लुक एट द किचन. आई एम सच अ मेस टुडे. डूड यू आर लाइक एन आवर लेट. शर्म आती है नहीं आती है हैं? Hi Dikshita's vlog. Guys, the spaghetti is ready. Since this bitch was an hour late, तो ये अब हलवा बन चुकी है. स्पेगेटी नहीं रही है. But give me the taste test. चलो taste test करो. बोलियो तो पैलेट साफ करने के लिए. I hope it's taste. उस टाइम पे बहुत सुंदर थी. Bitch, सच बता यार. सच. अबे सच में नमक ठीक है और सब छोड़ो हैं. यार ये ब्लॉक कर रही है. मत डालना प्लीज. इनहांस हो गया इसका टेस्ट. मतलब वो सॉसी नहीं रही लेकिन टेस्ट फ्लेवरफुल बहुत ज्यादा. ट्राई कर सकते हो रेसिपी है ना. यू कैन ट्राई दिस रेसिपी. हाँ और तू इसको ऐसे करना. नहीं ऐसे आने दो ना. वो लंबे लंबे अच्छे लगेंगे फोटो. हाँ आएंगे रुको आएंगे. हम ऐसे चलो गाइस वील एंजॉय आवर स्पेगेटी गॉसिप एंड देन आई विल मीट यू. चलो ऊपर चले. देखो मैंने इनको पैसे नहीं दिए ये बोलने के. गाइस डू यू रिमेंबर द व्लॉग जिसमें गिरी थी. आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन. You forget about all types of things. You remind me of the Arizona thunder. गाइस स्पेगेटी खत्म नहीं हुई है. वी आर ऑलरेडी ऑर्डरिंग मोमोज. Satisfy the times that make you wonder about the bigger picture in your life. The simple times in the Arizona thunder. rule is trumps every label. नहीं ऑरेंज. Comment below blue lays या orange lays. Blue green, Orange blue. dark green. Sorry, blue, dark green or Chili lemon. Yes. करना होगा. yellow. नहीं. और orange then blue. ये फिर In this order. Blue, dark green or yellow. बस. we being gluttonous part 2 we ordered momos. Tell me in the comments who all love momos. The things you remind me of the Arizona thunder. Satisfy the times that make you wonder about the bigger picture in your life. Guys, we just realized कि मेरा उतने एक बैग से बिल्कुल लेने वाला. मेरा आधा लगेज आया है उसमें अभी तक because I have my gadgets, camera, skincare सब कुछ. तो we've just come to a store to check something new and कुछ नया like कुछ छोटू सा लगेज लेने के लिए. My brother recently bought a छोटा सा bag before leaving and मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था. So I'm thinking I'll buy the same one if I get it. लॉक में क्या पता है ऐसे लॉक उसमें ऐसे यूएक की होता है मास्टर की एयरपोर्ट मास्टर के पास होता है वो चेक कर लेता है कुछ डाउट होता है. Got it. I bought this bag. I'll show you बाकी घर. The simple times in the Arizona thunder. The Arizona thunder tonight. Hi guys, it's currently 9:30. I just got done with my dinner. My room is a freaking mess and I'm still not done with my packing. I think last thing you saw was me buying that bag. So this is the bag that I ended up buying. This is actually pretty unique. So ऊपर से it's like this. ऊपर से zipper kind of situation. I don't know how to explain it. And then नीचे से it opens like a suitcase. तो ये ऐसे करके खुलता है. So it's like really like 2-in-1 kind of a bag और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये. सो आई गॉट दिस क्योंकि एक बैग में तो मेरा लगेज डेफिनेटली फिट नहीं आता. ऑब्वियसली 2 महीने का सामान एक बैग में ले जाना इज इम्पॉसिबल. आई वॉज एक्चुअली लाइक ओवर एस्टिमेटिंग माई सेल्फ एंड कंसिडरिंग आई एम एन हैवी पैकर. I did a good job at not packing a lot of things. The only thing that's left to pack right now is my skincare, makeup, like उस टाइप की चीज़ें. And वो सब मैं अब कल करूँगी because I'm knackered at this point and like
लुक एट मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही है. लाइक ओ माई गॉड, इतना थकान हो रही है ना मुझे. अब आई एम थिंकिंग आई जस्ट रिमूव दिस मेकअप, गो टू बेड, एंड कल मे बी आई कंटिन्यू दिस व्लॉग, या फिर आई डोंट नो, लेट्स सी. कल कुछ होगा तो मैं आपको बताती हूँ. सो या, बाय, गुड नाइट. So where you wanna go? Let's see it all. Selfies on the Great Wall, maybe the Taj Mahal. Hey, we could stay out late after dark. Take a gamble in Monaco. We could swim with the sharks.